We are also honored to have with us the Honorable Governor of Assam, His Excellency Shri Lakshman Prasad Acharya, our chief guest for today's aerial display. মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা বাইদেউ উপস্থিতি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে মুখ্য অতিথি সন্মানীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰী লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যদেৱক আমাৰ মাজত উপস্থিত থকাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। Thank you, sir. Ladies and gentlemen, before we begin the flying display, please note the display layout. Aircraft will mainly arrive from the right side of Grandstand and Umananda Temple in the east. আজি সকলো বায়ু প্ৰদৰ্শন এই নদীৰ ওপৰতে আপোনালোকৰ সন্মুখত অনুষ্ঠিত হ'ব। বিমানবোৰ আপোনাৰ সোঁফালৰ পৰা অৰ্থাৎ পূব দিশৰ পৰা আহিব আৰু নিজৰ মনোমুগ্ধকৰ কলাবাজি দেখুৱাই প্ৰদৰ্শন কৰি বাওঁফালে অৰ্থাৎ পশ্চিম দিশৰ ফালে গৈ অন্তৰ্ধান হ'ব। आज का संपूर्ण वायु प्रदर्शन इसी नदी के ऊपर आपके सामने होने जा रहा है। विमान आपके दाहिने अर्थात पूर्व दिशा से आते हुए दिखेंगे और अपनी चित्ताकर्षक कलाबाजियां दिखाने के बाद बाएं ओर यानी पश्चिम दिशा में प्रस्थान करेंगे। Today's flypast showcases the glorious journey of the Indian Air Force from the legendary Harvard of the 1940s to the cutting-edge Rafale of 2025. Each aircraft a testament to the technological evolution and operational excellence, maintained with precision by our dedicated air warriors and flown with pride by our valiant pilots. Leading the flypast approaching now from the Umananda end, a first formation. Steady, poised and majestic, the proud workhorses of the Indian Air Force, Mi-17 helicopters in the Dwaj formation. Leading the formation is Wing Commander Shwetang Singh Dagur. Joining him are the proud air warriors from the Eastern Hills, JW Dipankar Barua and JW Molay Pritam Sekhia. And the formation is proudly trooping the national flag and the Indian Air Force flag. এই আটক ধুনীয়া যন্ত্ৰবোৰে ভাৰতীয় জাতীয় পতাকাক ওপৰলৈ কঢ়িয়াই লৈ যায়। গুৱাহাটীৰ আকাশত বীৰ আৰু সতৰ্কতাৰ প্ৰতীক। प्रतिबद्धता की प्रेरणा, मातृभूमि का वरदान हूँ, योद्धाओं का बलिदान मैं देश का अभिमान हूँ। देश की आन, पान और शान को दर्शाते तिरंगे को हवा में लहराते हुए आपकी दाहिनी ओर से ध्वज फॉर्मेशन। And now get yourself for a surprise, slicing across the Brahmaputra skies in the honor of the valor of the Assamese people. Call sign Lachit comes the answer to our enemies, the Tejas, led by Wing Commander Paritosh Bansal. হাত চাপৰি বজাই সম্ভাষণ জনাওক ভাৰতীয় মাটিতে গঢ় লৈ উঠা ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ From the right of the grandstand, behold
the Mi-17 1V helicopters, call sign Holong in the classic Vic formation, led by Wing Commander Rishi Kant. Now, emerging from the woman on the end, call sign Rhino, the Apache attack helicopters, in a razor-sharp Vic formation. At the controls, Group Captain Anand Kumar Yadav. এতিয়া পূব দিগন্তৰ পৰা ওলাই আহিছে লাইট কম্বেট হেলিকপ্টাৰ আৰু আপাচি এটেক হেলিকপ্টাৰ। जय हिंद, नमस्कार, गुड आफ्टरनून गुवाहाटी। की खबर सब भालने सारंग टिमो फालोर पोरा स्वागतम जनाइज आज ही दिन टू फ्लाइंग और खाने बोर भाल। Today here as we celebrate the 93rd anniversary of the Indian Air Force, this year's theme, infallible, impervious and precise, comes alive not just in words but in motion right here over the majestic Brahmaputra. Guwahati, ami arambho korone etya. All right then, get your cameras up and your hearts racing. And now without further ado, please welcome the brand ambassadors of the Indian Air Force, the Sarang Helicopter Display Team. What a grand entry by the Sarangs, slicing through the skies in the mighty arrowhead formation. Now watch closely as the team is changing to wind down formation, raising a toast to the 93rd anniversary of the Indian Air Force. फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं सारंग 1, जिसमें उड़ान भर रहे हैं टीम के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर अभिजीत कुमार। उनके ठीक पीछे सारंग 5, उनके पीछे सारंग 4, बाईं ओर सारंग 2 और दाहिनी ओर उड़ान भर रहे हैं सारंग 3। आज सारंग 1 के सह पायलट है स्क्वाड्रन लीडर राहुल। स्वदेशीकरण के माध्यम से आधुनिकीकरण, स्वदेशी रूप से निर्मित प्लेटफॉर्मों के संचालन और आत्मनिर्भरता का समर्थन करने की हमारी खोज का परिणाम है। और अब भारतीय वायुसेना की यह भव्य टीम अपनी अगली आकृति से आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए हवा में अंग्रेजी अक्षराई का निर्माण कर आपके सामने से गुजरेगी। And this I stands for you, me, our motherland, and for this indigenously developed helicopters. মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো যে যেতিয়া আমাৰ হেলিকপ্টাৰবোৰ আপোনালোকৰ আগেৰে যায় তেতিয়া আপোনালোকে হাত চাপৰি বজাব। Coming in, Sarangs representing the Atmanirbharta of our nation, the India Formation. सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने भूखों से उड़ा दी। Continuing with the introduction, the pilot in command of Sarang 2 is Sergeant Leader
his co-pilot today is Squadron Leader Buddhi Sagar Dumre. The captain of Sarang 3 is Wing Commander Veer with his co-pilot Squadron Leader Aditya. Wing Commander Janpriya is in command of Sarang 4 with his co-pilot Squadron Leader Ankita. And our number 5 is being flown by the deputy leader of the team, Wing Commander Ravish with his co-pilot Squadron Leader Ajit. और अब अपनी नजरें कामाख्या और उत्तर गुवाहाटी के बीच से आते हुए हेलीकॉप्टर पर बनाए रखें। जल्द ही लीडर के आदेश पर यह टीम डायमंड की आकृति में तब्दील हो जाएगी। आइए सुनते हैं लीडर की कमांड सीधे उनकी कॉकपिट से। That was the leader, and here's the reaction. An aerial diamond dedicated to the gateway of the East, Guwahati. And now don't look away even for a second, as you are in for a breathtaking surprise, and there goes number 4 pulling up for a stall turn. And now, as the aircraft fly past, don't forget to wave at the pilots and wish them luck. Here they are making a short exit and will be soon back in the arena with more thrill. भारतीय वायुसेना अचूक अपने लक्ष्य में, अभेद्य अपने संकल्प में और सटीक अपने हर अभियान में. And to showcase these qualities, Sarangs are now positioning for the team's signature maneuver, the Dolphins Leap. So hold on to your hats because it is about to get epic. These choppers are about to defy gravity and blast off into the Guwahati skies, symbolizing the motto of the Indian Air Force, touch the sky with glory. So please look straight ahead as Sarang 1, 2 and 3 run in for the Dolphins Leap. And here they go, like a dolphin in the ocean, Sarangs in Dolphins Leap. And as promised, there goes number 4 joining up with the formation.